तिरुवनंतपुरम में जल्द ही भारत का पहला नेचर लैब खुलने वाला है। इस लैब में छात्र और प्रकृति प्रेमी प्राकृतिक जंगल लगाना और जैव विविधता को संरक्षित रखना सीख सकेंगे। नेचर लैब एमआर हरि की देन है, जिन्होंने तिरुवनंतपुरम में 2.5 एकड़ से ज्यादा रकबे में फैले अपने मियावाकी जंगल को नेचर लैब में तब्दील किया है। This is a unique nature lab. We are reaching the conclusion that this should be converted into a nature lab where students and children can come and learn themselves from the nature. And for that we are associating with some NGOs and even my own company, Invis Multimedia. We are all focusing on that. Probably in 1 or 2 months time we will open this as a nature lab, probably the first nature lab of India, where children can come and learn nature from the land itself. हरि अपने जंगल में एक प्राकृतिक तालाब भी बना रहे हैं। इससे छात्रों को सीख मिलेगी कि जल निकाय के आसपास किस तरह प्राकृतिक इकोसिस्टम विकसित होता है। हरि का कहना है कि मियावाकी जंगल बनाने से उन इलाकों में कार्बन की हालत सुधर सकती है जहां जमीन की कीमत बहुत ज्यादा है। When we are conventionally planting, we plant around 400 trees in 1 acre of land. In Miyawaki model, you can plant around 16,000 plants in 10 cents of land, and even if 50% of that survive, the ratio is very high. In other words, if you have 10 cents of land, you can plant Miyawaki model afforestation. You can do Miyawaki model afforestation in that land, and you can get the benefit of planting trees in conventional way in 1 acre. So the advantage of Miyawaki model is that even if you don't have enough land, you can get the carbon sequestration and the soil carbon, all those components from that 10 cents alone by using Miyawaki model. हरि का मियावाकी जंगल तिरुवनंतपुरम के पुलियानारा कोना में है। जंगल में टहलते हुए उन्होंने बताया कि इसे बनाने का विचार उन्हें कैसे आया। I was brought up in a village where there were too many trees and it was surrounded by butterflies and birds and all those things. But when I left the place and when I came to other cities and towns for a living, I missed that and I wanted to bring them back. Today I think I have changed this land to a very large extent, and that is possible in any part of the world. I mean, if you have land, you can change it with the Miyawaki model of afforestation, which is basically dense planting. You have to use the local potential natural vegetation. पुलियारा कोनम के अलावा हरि ने शहर के बीचों बीच कनक कुनुनु में और चाल गवर्नमेंट स्कूल परिसर में भी छोटा सा और घना मियावाकी जंगल बनाया है।